उनको नहीं नहीं, आप रूम पे नहीं आएंगे, आप फिजिकली यहाँ पे होगे ना। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको रूम की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, एज पर योर कन्वीनियंस। अभी फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो फिर एक हुआ है कि मैं यहाँ से बंद कर दूंगा बाद में ना। हाँ, आप अपना बंद करें ना उसको ना, माइक म्यूट करें, बाकी भी चीज़ म्यूट। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर ऑलवेज वेलकम टू दिस सेशन। और आज हमारा 7th बैच स्टार्ट है CHRP का। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और हमारा जो CHRP है, उसकी जो कंपोजिशन है और उसका जो मोडालिटी है या मोडस ऑपरेंडी कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। और ऑलमोस्ट हमारे पास इस बैच में अराउंड 17 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनरोल किया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन है और कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑन साइट हैं, राइट। और हमारे पास सब स्टूडेंट के लिए प्रोविजन है कि ऑन साइट अटेंड करना चाहें या ऑनलाइन अटेंड करना चाहें, या किसी वक्त भी इस मोड को चेंज करना चाहें तो उनके पास ये फ्रीडम है। अच्छा जी, हम 7:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, अराउंड 9:30 पे इसको क्लोज करेंगे। और बीइंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हम पाकिस्तान में जॉन मैक्सवेल का जो कंटेंट है, जॉन मैक्सवेल एक इंटरनेशनल ब्रांड नेम है लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर। उनके कंटेंट को पाकिस्तान में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफर करते हैं, डेट इज अ लाइसेंस कंटेंट, राइट। और जो हमारा सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का 7th बैच का प्रोग्राम है, और इसके अलावा पहले से भी जो चल चुके हैं, हमने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं। डेट इज HR के लोगों की एक प्राइम कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप को डेवलप करना। उस नीड को कैटर करने के लिए हमने जॉन मैक्सवेल के कोर्सेज भी इस प्रोग्राम में इंडक्ट किए हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ सेशंस हैं, वो डिफरेंट ट्रेनर्स करेंगे। कुछ इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी होंगे, कुछ पाकिस्तानी ट्रेनर्स भी होंगे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे, राइट। तो जो लोग अटेंड कर लेंगे हमारे पास फिजिकली, उनके लिए भी, और जो किसी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से, किसी ऑफिस किसी रूटीन की वजह से अटेंड नहीं कर पाएंगे, उन तक हम एक जो आज की सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग, और इसके बाद जितने भी सेशन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग में हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने लेजर टाइम में या जब फ्री हों या वीकेंड के ऊपर भी फैसिलिटेट हो सकें उस मटेरियल के साथ। उसके बाद हम लर्निंग मटेरियल भी शेयर किया करेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने डेवलप किया उसके अंदर, राइट। हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में और वैसे भी ऑन कॉल आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे। आप जब भी चाहें, कोई भी क्वेरी हो, HR से रेलेवेंट, कोर्स से रेलेवेंट, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सारे फैसिलिटेटर जो हैं उस ग्रुप में ऐड हैं, आप किसी भी फैसिलिटेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है डेट इज रिलेटेड टू, एक हमने पोर्शन लिया है जॉन मैक्सवेल की बड़ी मशहूर कोर्स है, मास्टरमाइंड कोर्स है, इसका नाम है 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे पर्सनल ग्रोथ को, प्रोफेशनल ग्रोथ को, इंटेंशनल ग्रोथ को और एक्सीडेंटल ग्रोथ को। और हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी ग्रोथ को इंटेंशनली मेंटेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और किस तरह से अपनी जिंदगी के बारे में प्लान कर सकते हैं। जो कुछ हो चुका वो हो चुका, इसके बाद से हमने किस तरह से डायरेक्शनल होना है। उस
सेशन के लिए हमने तबीता जलाल को जहमत दी है कि वो इस सेशन को फैसिलिटेट करें। शी इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम जॉन मैक्सवेल टीम। और इसके बाद मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं इस फोरम को उनके हैंड ओवर करता हूँ कि वो फैसिलिटेट करें आज के सेशन में। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी बात करनी है, कोई तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, चैट में भी आप आके बात कर सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके बाद आप अपना अपना इंट्रोडक्शन भी ग्रुप में दीजिएगा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। राइट, नाउ प्लीज मैम स्टार्ट द सेशन। Hello, good evening, salam. Right. I believe I'm audible to each and every one of you. I'm Tabita Jalal, as Mansoor Sab has already introduced me. I'm one of the program facilitators here at the International Leadership Training Institute based in Islamabad, and also one of the faculty members, mainly for the leadership courses, and there are a few other courses we are providing, just the part of this course as well. I welcome you all on the board today, and I'm glad that we are starting off with one of our flagship course. This is based on John C. Maxwell's book, 15 Invaluable Laws of Personal Growth. So I simply want to just hold on a moment. I'm not visible. Not sure. I don't know what's wrong here with me. It's good that if I get to see myself too. Now it's good. And screen is visible too, right? Okay. So the course altogether is comprised of 15 laws of personal growth. लेकिन आज यहाँ पर फर्स्ट लॉ है जिसको हम शेयर करेंगे और somehow डिस्कस भी करेंगे because 2 hours are not sufficient enough और 2 घंटे का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी I would love to make it interactive और जहाँ कहीं आपका input आ सके, also appreciate that. I have students in the class too, यहाँ पर भी मौजूद हैं और on site, and I'm glad that you have taken time कि आप इसको online join कर सकें. और जिस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, as I'm sharing about the personal growth, उसमें ये बहुत अच्छी बात already है, which shows that you all are available here और आप सब अपना time निकाल रहे हैं और no matter what, you have not allowed the other circumstances कि वो hinder करें आपकी growth को. So let's get started, and here we go with the first slide. The law of intentionality. So जो पहला लॉ हम आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ इंटेंशनैलिटी है, लेकिन हम बाकी जो सारे लॉज हैं उनको भी देखेंगे. आप टैग लाइन पे गौर कर सकते हैं, ग्रोथ डज नॉट जस्ट हैपन. ग्रोथ खुद ब खुद नहीं हो जाती है. यकीनन आप सभी इस बात से एग्री करेंगे. खुद ब खुद बढ़ना नहीं होता है. ग्रोथ डज नॉट हैपन इटसेल्फ. और उसमें आकर हम दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां से हम बाकी बात को शुरू करेंगे. सो would you be kind and courageous enough to answer this question? What do you want out of life? Anyone? And it could be more than one.
Would anyone like to answer this question? What do you want out of life? Faraz Khan Saab, your mic जी is unmute. जी Yes, जी please. इन टर्म्स ऑफ करियर अगर हम देखें तो हम इंसान की यही अगर मैं अपनी बात करूं तो यही थॉट होती है कि मैं अपने करियर में अपने प्रोफेशन में जो सर्टेन उसमें अचीवमेंट सोची होती हैं वो अचीव कर लूं। तो Hmm. आई इंसान की यही प्रायोरिटी होती है फॉर द प्रोफेशनल लाइफ। That sounds great, but your life is not comprised of just a profession, right? सिर्फ एक करियर या प्रोफेशन आपकी पूरी जिंदगी नहीं होता. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. और फराज साहब ने इस बात को खुद भी एडमिट करते हुए बोला कि अगर करियर की बात करें, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट द होल लाइफ. सो जिंदगी के और बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे और हिस्से हैं जिनके अंदर वी वांट टू बी एन अचीवर, और हम उनमें बहुत कुछ चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं. लाइक नॉट अ मस्ट दैट यू आर इनटू अ करियर जहां पर आपका पूरे का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल हो रहा हो. ऑलराइट, सो ईच वन ऑफ अस आर अ क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, और हम में हर एक के अंदर यूनिकनेस पाई जाती है. और वो यूनिकनेस किस वजह से है? वो हम में से हर एक के अंदर पाए जाने वाले पोटेंशियल की वजह से. और पोटेंशियल वर्ड किसी भी जुबान में हम देखें तो ये एक भारी वर्ड है. दिस इज नॉट एन easy going word, this is not a simple word, and this word does not have any lighter meaning. Or this is the word which actually makes you unique, makes you stand out in a huge world that we live in, although it is known as a global village now. लेकिन इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर हमारे जो पोटेंशियल है वो हमें यूनिक दिखाता है, वो हमें मुनफरद दिखाता है और बताता है. So this is why we are asking you that what do you want out of life? जिंदगी में जो आपके अंदर पोटेंशियल रखा गया, आर यू लिविंग दैट full potential? Are you growing with the potential that you have in yourself? बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जिनकी लाइक अगर देखा जाए तो मे बी फिजिकली वो डिप्राइव्ड है. हो सकता है कि उनके दोनों दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है. स्टिल पोटेंशियल लाइज इन देम. और उस पोटेंशियल की वजह से वन वे और द अदर दे आर इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड. वन वे और द अदर दे आर लिविंग द लाइफ जिसमें वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं. सो इट्स अ लॉट दैट वन कुड डू. इसी तरह से लाइक योर करियर इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, but maybe you have potential to do so many things other than this, apart from the career. और बहुत कुछ आपने अगर रोका हुआ है तो इसका मतलब है you are not reaching out your potential. So why we have put this session in the very beginning of this eminent course, और ये बहुत अहम है यकीनन आपके लिए, इसीलिए आप अपने करियर में और ज़्यादा बढ़ने के लिए यकीनन इसका हिस्सा बने हैं. And you have chosen to spare time, not only to spare it but to make it even more valuable. और आपने ना सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्टमेंट बल्कि योर मनी इन्वेस्टमेंट इज हेयर, एंड ऑल्सो योर एनर्जी इन्वेस्टमेंट. बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हुए आप यहाँ पर आ रहे हैं. सो व्हाई वी हैव पुट दिस particular session in the beginning, reason is we not only want you to be motivated, but also we want you to think about the more things and the potential, rest of the potential that you have in you, जिस तक आप अभी पहुंचे नहीं, जिसको आपने अपने अंदर एक्सप्लोर नहीं किया, जिसको आप बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप भर सकते हैं. So please do think about that what do you want out of life? आप जिंदगी में
क्या चाहते हैं? Is it all कि आप इस जॉब पे to become some deputy, some GM, और फिर इसी पोजीशन से ऊपर होते हुए maybe you want to own a company, just one company. Maybe you want to become an owner of an organization. Maybe you want to open your own firm on consultancy, on HR. So इस तरह से अपने पोटेंशियल को मजीद जानने के हवाले से आपको इस सेशन में हम encouragement देते हैं. Somebody's mic is unmute. Would you please mind turning it off? Thank you. Or since I'm unable to see myself, that is what has given me a bit difficulty. And I don't know this. Huh? Okay. But maybe it's fine because I don't want to disturb others. All right. So, as for this question, please do think, what do you want out of life? Zindagi mein aap kya chahte hain? Is it all about the career? Is it the other things beside this? Maybe you are a good poet. Maybe you are an author as well. Maybe aap kisi aur apne talent or skills se you can make the world a better place to live for others. कुछ और इसके साथ कर सकते हैं जो आपने अभी तक ना किया हो, and you would be thinking कि हम आगे को कर पाएंगे. So इसको हम और ज़्यादा डिटेल में इस सेशन में देखने जा रहे हैं. And once again, the tagline is popping up in front of you, which says, growth does not just happen, or it does not happen itself. Yeah. Yeah. Is it clear? Okay. That is what I've done. So let me introduce you to the other few laws that we learn in this session. Sorry, but here we are just going to introduce, but otherwise actually we learn in this course. So first of all is law of intentionality. And this law tells us that growth is only guarantee that tomorrow is going to get better. अगर आप आज नहीं बढ़ रहे तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपका आने वाला कल अच्छा होगा? Right? So every day you got to do something. Every day. अगर रोज आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ सीखते जाते हैं, रोज थोड़ा सा अपने पोटेंशियल को यूज में लाते हैं, तो इसका मतलब है यू आर एडिंग अप मोर. और इसी लॉ को हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अवेयरनेस. नो वन कैन प्रोड्यूस ग्रेट थिंग्स इफ ही इज नॉट थॉरली सिंसियर इन डीलिंग विद हिमसेल्फ. सो अगर किसी को अपना ही नहीं पता, अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे किसी दूसरे को उसके पोटेंशियल को फुली जानने में या उसको काम में लाने में मदद कर सकता है. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में अवेयर हों, आप कितना ज्यादा कर सकते हैं. और मे बी आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा आप यकीनन कर सकते हैं, बट आपको जब ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, तो उससे ज्यादा. सो अपना स्वॉट एनालिसिस दूसरी तरफ हम कह सकते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस वेरी वेल. अब यहाँ पर एक और बात भी है. ऑल्सो इन दिस पर्सपेक्टिव समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि अभी जहाँ पर हैं लेकिन फ्यूचर में हम कहाँ पर होंगे. और मेनी टाइम्स हम
सिर्फ इतना सा जानते हैं कि अच्छा चलें साथ में कुछ ये कर लेंगे और ये कर लेंगे, बट यू नो वी रियली डोंट थिंक, और सच में हम उस चीज़ तक नहीं पहुंचते हैं कि मेरा नेक्स्ट 3 years, 5 years, 10 years टारगेट क्या है, हाउ मच मोर आई एम गोइंग टू डू एंड आई एम गोइंग टू अचीव वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू बी. That is also the law of awareness जिसमें हम ये बात सीखते हैं. And let me tell you, हम राइड बुक करते हैं और अगर ये बात मुझे पता है कि मैंने डेस्टिनेशन मेरी जो है वो इस्लामाबाद का नेक्स्ट कॉर्नर है और जो दूसरी जगह है, मे बी आई वांट टू गो टू बैरियर टाउन और वहां तक जाना है, बट इफ आई डोंट नो वेयर आई एम एट द मोमेंट, तो मैं राइड को कॉल कहाँ पे करूंगी? So this is what actually we learn through this law of awareness. लेकिन इतने में ही you have the clear idea now, क्योंकि इसकी टैगलाइन से और अदरवाइज इतना बताने से भी यकीनन बहुत कुछ ये आप जान पाए कि self awareness is this very much important to grow in your personal life. Then law of the mirror. The most important words you hear every day are the words that come out of your own mouth. If I ask you, क्या आपका दिन में सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ गुजरता है? You might tell me, maybe ऑफिस में है और आपकी टीम है तो शायद उनके साथ. You might tell me, मेरी कोई फ्रेंड है या मेरे फैमिली मेंबर है उनके साथ. मे बी द मैरिड पीपल कैन टेल मेरे बच्चों के साथ, मे बी द वाइफ, मे बी द हस्बैंड. लेकिन द फैक्ट इज द मोस्ट ऑफ योर टाइम स्पेंट एवरी डे इज विद योरसेल्फ. हर शख्स का अपने आप के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है. और अपने आप के साथ कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा वक्त सबसे ज्यादा गुजरता है? इट इज यू इनसाइड, जो अपने आप के अंदर हर टाइम सोच रहा होता है, अपने आप के अंदर हर टाइम बोल रहा होता है. अब ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप जो अपने साथ बोल रहे होते हैं, आपकी हम कलामी कैसी है. इज इट पॉजिटिव? इज इट नेगेटिव? इज इट एनकरेजिंग? इज इट डिस्करेजिंग? Is it active? Is it passive? ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर आप अपने लिए पॉजिटिव बोलते हैं तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन brings the positive results. Negative thinking, negative action bring the negative results. This is why it really and truly matters कि आप जो सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ गुजार रहे हैं, राइट, और अपने साथ आपकी बातचीत, अपनी थिंकिंग, वो कैसी है आपकी. लॉ ऑफ मिरर में हम ये सीख पाते हैं. और अमूमन जब हम लॉ ऑफ मिरर सिखा रहे होते हैं, बाय द वे इट्स अ पिक्चर फ्रॉम द गूगल, तो वहां पर वो पिक्चर बहुत कुछ क्लियर करती है. आईने के सामने एक बिल्ली बैठी है, लेकिन आईने में वो शेर को देख रही है. तो दिस इज व्हाट रियली मैटर्स, कि आईने में शेर को देखना इज एक्चुअली हाउ यू सी योरसेल्फ. इफ यू सी योरसेल्फ स्ट्रांग, वी बिलीव दैट यू स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रांग. इफ यू सी योरसेल्फ वीक, श्योरली दुनिया तो पहले ही फिर बहुत वीक. भी आपने सुना हो कि किसी ब्रांड का कोई प्राइस टैग किया होगा तो कोई जाकर उसकी कीमत उसके प्राइस टैग से ज्यादा दे के आए. आप अपनी जितनी कीमत लगाते हैं, द वर्ल्ड इज गोइंग टू पे दैट मच अलोन, हार्डली. वो ही बहुत मुश्किल से दुनिया वो करती है. इसलिए इफ यू डीवैल्यू योरसेल्फ, पीपल आर रेडी टू डीवैल्यू यू इवन मोर. लॉ ऑफ इट टेल्स अस हम अपने वर्ड्स को किस तरह से एडजस्ट करें, कैसे हम मॉडिफाई करें अपने थिंकिंग प्रोसेस को, एंड वी स्टार्ट वैल्यूइंग आवरसेल्व्स. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. थोड़ा सा यू नो दिस इज
इसके ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बट ओके, लेट मी गो विद द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी. द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी वर्ड ही बता रहा है मुस्तकिल मिजाजी. सो जब आप कंसिस्टेंट हैं, मुस्तकिल मिजाज हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है. लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और आप समझते हैं किसी दिन एक धमाके, लिटिल बाय लिटिल, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और जो लाइक हमारे बहुत शुरू में और बचपन में कतरा कतरा मिलकर बहुत हो जाता है. एक्चुअली सक्सेस इज नॉट दैट यू गेट टू हैव समथिंग एकदम से. Success is that you get to do better than yesterday. If you are doing better today, then surely you are a successful person and you are already on the steps of winning a big deal. Then law of environment, it says visit great places, be with great people and attend great events. हम अक्सर जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और कई बार इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लीडर्स इन्वेस्ट करते हैं, हम वहाँ जाते हैं और हम यही अच्छा मे बी वी आर एट द गुड प्लेस, वी जस्ट फाइंड आउट कि अच्छा एम्बियंस है और ये सब कुछ, बट वी लर्न्ड नथिंग. वी वेंट देयर लेकिन हमने कोई कांटेक्ट नहीं बनाया, हमने शायद उस तरह से सुना नहीं, वहाँ कोई मे बी अवेलेबल ऐसा कंटेंट था जिसको हम ला सकते थे साथ, ताकि उस टाइम पे नहीं पढ़ सके. My abilities. So law of environment ये बताता है हमारी ऐसे कंडूसिव एनवायरनमेंट के अंदर हों जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो कर सकें. अक्सर देखने में आता है कि लोग हंस के वापस आ गए, लोग सिर्फ जो वहां पर गए और वापस आ गए. नॉट ऑल द पीपल, नॉट even 50% of the people, mostly it is observed, जो उस एनवायरनमेंट का भरपूर फायदा उठाएं. लेकिन a person who wants to grow, actually he is the one जो ग्रोथ एनवायरनमेंट को समझता है, और अगर ग्रोथ एनवायरनमेंट नहीं है तो वो ग्रोथ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. इसी इंटरनेट पर लर्निंग मटेरियल मौजूद है, इसी पे एंटरटेनिंग मटेरियल मौजूद है, जिसमें लर्निंग कंपैरेटिवली बहुत कम है. But at the same time, entertainment and learning also is available. So this is your choice कि आप अपने इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. Then again, आपके अपने शोबे से, अपने डिपार्टमेंट से मुतालिक, then you know, otherwise बहुत सारी और बातें that you know maybe to polish your skill, आपके पोटेंशियल को सामने लाने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट, मे बी यू कैन रीड बुक्स, जिसका ट्रेंड अभी कम है, आर्टिकल्स आर अवेलेबल, ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, a lot of things are there, videos are there जहां से हम सीख सकते हैं. But many times people don't create that environment. The environment is not always available. Environment create किया जाता है. मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी दूसरे लॉ की तरफ. I mean the next law. I believe that all of you know about the shark, because we have the smart people on board with us at the moment. और shark के बारे में I believe you know the fact कि उसको जब आप एक पॉन्ड में डालेंगे या उसको आप एक एक्वेरियम में डालेंगे तो वो कुछ फीट तक बड़ी होती है, लेकिन उसी शार्क को अगर आप समंदर में छोड़ दें तो वो कई मीटर्स तक बड़ी हो जाती है. सेम शार्क. What makes the difference? The environment. So law of environment matters a lot. जब आप अपना environment ऐसा रखते हैं जहां पर you find great people, कि अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो आप कतरा के गुजर नहीं जाते हैं, but you try your level best कि आप उनके साथ बैठें instead of you know
wasting your time instead of thinking of some other time that will come. And tomorrow never dies, tomorrow never comes actually. So आप उस मौके का फायदा उठाएं and just sit around and learn something. और हमारे इदारे का मोटो है learn, live, lead. और हमारे MOUs हैं. So one of the universities that we have an MOU with, वहाँ के senior professor साहिबान वो बहुत शौक से जब उनके पास वक्त हो यहाँ आते हैं, and we all try to, like, हम अपना काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम में से हर एक इंटेंशनली अपनी सीट से उठ के जाता है, इसलिए कि उनके साथ 5-6 मिनट भी खड़े होने में हमें कुछ नया सीखने को मिल जाता है, उनके जोक्स में भी हमें कुछ नया सीखने को मिल जाता है. एंड दैट इज हाउ वी an effort on that. Not all the times this is the case, but it's just an example. Next is law of design. The only way you can expand your life and make it better is to grow in that area. The only way you can expand your life and make it better is to grow in that area. So law of design में आकर हम ये देखते हैं कि let me give you an example and you'll get to know better. हमारा जो कैपिटल है इस्लामाबाद, इसके अक्सर एंट्रेंस पर जब you enter the city तो लिखा होता है इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल. सो इट्स नॉट कि ये सिर्फ कोई बात जो है वो कोई इश्तिहार है दिया हुआ और बस उसको ऐसे ही फेमस कर रहे हैं. दिस इज अ फैक्ट. इस्लामाबाद इज द ब्यूटीफुल. एंड आई कैन टेल यू why it is the beautiful, why it is actually known as one of the beautiful capitals in the world. इसलिए कि जब आप इसका गूगल से 3D व्यू जो स्पेस से देखा जाता है, अगर आप वो 3D व्यू देखें तो पूरी दुनिया के जो बाकी दो, लाइक ये ऑल टुगेदर 3 इंतहाई खूबसूरत दिखने वाले और नुमाया दिखने वाले कैपिटल्स हैं, उनमें से एक इस्लामाबाद है. फॉर व्हाट? क्या वजह है? रीजन इज डिजाइन. डिजाइन मीन्स द ऑर्गेनाइज्ड थिंग. जब एक उसका रुख है, एक तरतीब है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप देखें कि हजारों में सैकड़ों में दैट थिंग स्टैंड्स आउट, जो ऑर्डर्ड है. सो वो लाइफ जो ऑर्डर्ड हो, वो लाइफ जो एक पैटर्न पर चल रही हो, वो लाइफ जो एक तरीके कार के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ चल रही हो और फोकस के साथ, वो लाइफ हजारों लाखों करोड़ों में स्टैंड आउट करती है. हम जिनको नेशनल हीरोज कहते हैं, हम जिनको इंटरनेशनल हीरोज कहते हैं, हम जिनको सोशल पर्सनालिटीज के तौर पे जानते हैं, सो मोस्टली आई एम टॉकिंग ऑन द पॉजिटिव साइड. व्हाट हैज मेड देम स्टैंड आउट? उनकी लाइफ की एमिनेंस क्या है? डिजाइंड लाइफ. कुछ ऐसा जिसमें इंतहाई ऑर्डर्ड वे में उन्होंने जिंदगी गुजारी है, और अपने टारगेट को सेट करके जब जिंदगी गुजारी है तो आप देखें वो स्टैंड आउट कर रहे हैं और वो अलग नजर आ रहे हैं. So know this thing that for your personal growth, it's really important to live a designed life. तब आप अपने पूरे पोटेंशियल को रीच कर पाएंगे. I don't know if you have heard the man or not. Like, he's a great teacher, or he's been like, he was a successful businessman, but he passed away. Or Miles Monroe उनका नाम है. I would listen to him. He was a great motivational speaker. And once he said कि हजारों क्या करोड़ों लोग मनो मट्टी के नीचे खामोश दबे हुए हैं. और उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि उनमें से ढेरों अपने अंदर की इस्तेदाद को, अपने पोटेंशियल को अपने अंदर ही लिए
मट्टी के नीचे चले गए. Though they could benefit from it personally, their families could benefit from it, their city, their nation, and nations could benefit from it. Lekin when they have not tried, and when they never tried to reach out to their full potential, तो फिर जैसे वो आए, like somehow किसी लेवल तक उन्होंने उसको इस्तेमाल में लाया, खुद को एक्सप्लोर किया, अपने उस पोटेंशियल को काम में लाया, and then they have left. So साथ में it's the brainstorming thing as well. और I would like for you कि आप सोना जाएं और जागते हुए इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए, and do think of yourself and focus on your personal growth. Personal and professional growth are two different things. Professional growth is a part of personal growth, but it is not on the whole a personal growth. Next is law of pain. Good management of bad experiences leads to great growth. अगर कोई एक शख्स कहे कि कभी उसने जिंदगी में दर्द नहीं देखा, दुख नहीं देखा, तो मैं नहीं समझती कि वो दुनिया में मौजूद है. मैं नहीं समझती कि इस क्लास में मौजूद है कोई ऐसा. लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपने उस पेन से गेन ले रहे हैं. Are you getting the gain out of that pain? उन बैड एक्सपीरियंसेस की, उन हर्टफुल एक्सपीरियंसेस की गुड मैनेजमेंट की है? कोई बैठकर उन पर रिफ्लेक्ट की है? कोई देखा है, कोई सोचा है कि उसमें से मैंने क्या सीखा था, क्या किया है? अगर कोई सीख जाता है उस पेन में से, तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज ग्रोइंग and growing for better. Next is law of reflection. Learning to pause allows growth to catch up with you. आज की दुनिया, जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई हुई है कि लेट नाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, अब फोन्स हैं तो इंटरनेट का कोई टाइम नहीं है, 24/7 चालू रहता है. तो अगर लोगों के लिए लाइक दे कॉल इट अ डे, तो दिन खत्म हो गया ऑफिस से घर, और घर के कामों को करते करते टू द बेड. और इवन आज लोग बेड पे भी, दे आर स्टिल इन द वर्ल्ड, ऑन द रोड्स, राइट? They are still, busy in the meeting, talking to people, watching something. They are moving around the world. इतनी बिजी दुनिया हो गई है. मैं नहीं जानती कि आप में से कितने जो आपने देखा हो, लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस लॉ को बताना चाहूंगी. और हमारे पास अगेन हर लॉ के लिए 2 आवर्स का एक सेशन होता है, लेकिन इट्स जस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इन सब का आइडिया दिया जा रहा है. सो वी आर जस्ट थोड़ी रोशनी डाल रहे हैं. I have no idea, लेकिन कि आप में से कितनों ने देखा है, but there used to be tape recorders. जब शुरू के पहले tape recorders थे, और वो जो box type, और उस tape recorder के लिए जो cassettes होते थे, अगर देखा हुआ है तो वो cassettes कैसे थे? रील वाले, टेप वाले, और वो चलते थे, and one side and the other is just wrapping up the tape, और इस साइड से टेप चलता है. नाउ इंटरेस्टिंगली, अगर कंटिन्यूअली उसको चलाते चले जाते थे और वो चलता चला जा रहा होता था, तो वो गर्म होना शुरू हो जाता था, जो उसका टेक्निकल पार्ट था, जो इंजन था. एंड व्हाट वुड हैपन, कि उसका बटन मौजूद होता था ऊपर, जहां प्ले बटन था बिल्कुल उसके साथ पॉज बटन था. आज डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी जब हम कुछ प्ले करते हैं तो स्टिल वी हैव अ पॉज बटन. लेकिन व्हाई आई एम टेकिंग यू टू द एग्जांपल ऑफ दैट ओल्ड टेप रिकॉर्डर, द रीजन इज, जब वहां पर
वो बहुत ज़्यादा चलते चले जाते थे। हो सकता है कि जैसे मंसूर साहब जो प्रोग्राम हेड हैं CHRP के, आने वाले वक्त में आप उनसे ज़्यादा सीखेंगे और सुनेंगे, तो उनकी तरह लता मंगेशकर के गाने किसी को, या अ, वो अक्सर बीच में लगा देते हैं कि हाय मेरी अंगूठियां वाला। सो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, सो बार बार उसको सुनते जाते हैं और बार बार टेप रिकॉर्डर जो है वो कंटिन्यूली चल रहा है। अगर उस पे पॉज का बटन नहीं दबाते थे तो बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूली रनिंग ऑन, क्या होता था? ये होता था कि वो ढीली पड़ती और स्टक हो जाती और टेप टूट जाती थी। इसके साथ मैं रिलेट करना चाहती हूँ, डोंट अलाउ लाइफ कि अगर आप पॉज लें तो जिंदगी आपसे पॉज दिलवाए। दिस इज द फैक्ट। अगर हम पॉज नहीं लेते इंटेंशनली तो फिर जिंदगी में दौड़ दौड़ दौड़, देयर कम्स अ टाइम जब जिंदगी फिर खुद पॉज दिलवाती है, और तब अक्सर या तो फिर बहुत लेट हो चुका होता है या बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। ये दोनों में से एक बात जरूर होती है या दोनों बातें इकट्ठी होती हैं। This is why make it a habit to give yourself a time and have a thinking chair, a reflection chair, जिसमें आप maybe once a week, maybe twice a month, but do take time where you close the door behind you and you set time for yourself, no mobile phone, no distraction, but that 1 hour or maybe 2 hour, think, what are you doing? How much beneficial your doings are? What you want to do? Are you doing what you want to do? If you are not doing what you want to do, how long you want to continue like this? What will take you to the time, to the things where you would like to do what you actually want to do? What is required? Who are the effective people in your life? What you need to take out? What is the trash in your life? What is consuming your time and your hours? What is consuming your energy? Are you giving enough time to yourself? Are you giving enough time to your health? Because health is wealth, that is fact. आप कहते चले जाएं कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो स्टीव जॉब्स को आप देखें, लाइक he's done a lot. एप्पल कंपनी, उनके पहले एक कंपनी थी जो उनको हाइप पे ले गए, वो कंपनी अच्छी बढ़ गई, लेकिन बाद में उसी कंपनी में बाकी टीम ने वो कंपनी उनसे छीन ली और उनको किक आउट कर दिया। इट वाज हिज आइडिया, लेकिन दिस मैन केम अप विद अनदर आइडिया, और वो नई कंपनी बनाकर जब फिर हाइप पे आए तो उन्हीं लोगों ने उनको वापस बुला लिया। This man was so much into work, but you all know he is no more in the world. Why? इन सब बातों में ग्रो करते हुए प्रोफेशनली ग्रो किया है, लेकिन पर्सनली उनकी हेल्थ डिस्टर्ब, एंड ऑन हिज डेथ बेड in his last days he felt every moment burdened with the sorrow, where he confessed, I'm so sorry that the time I'm spending with my family, I have not been able to spend this time with my family. और ये मलाल, ये अफसोस, ये दुख वो अपने साथ लेके गए। Health is wealth. Although he became a wealthy person, a very well known person, wealthy इस हिसाब से भी, he was famous, wealthy इस हिसाब से भी, his idea was being cast by the world, hand by hand it was being taken. लेकिन the precious time, the moments that he was spending with the family, he knew it, अब बहुत कम वक्त है और मैं हर टाइम पे ये सोचते हुए गुजार रहे हैं that you know ये मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
So there are so many things we need to reflect. कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजों को टाइम दे रहे होते हैं. There are things where we जो हम खा रहे हैं क्या वो मेरे लिए हेल्दी है? क्या मेरी नींद काफी हो रही है? खराबी आ रही है तो कहाँ आ रही है? किसी शख्स की वजह से आ रही है? मेरी कौन सी हैबिट की वजह से आ रही है? I once met a person and he did quit on smoking. और उसके हालात इतने बुरे थे उससे पहले. And when he did quit on the smoking, उसने कैलकुलेशन की, उसने कहा मेरे 15 से 20 हजार बचत हो रही है. Reflection. That's important and that helps you grow. So quickly आगे बढ़ते हैं. Law of ladder. हम देखते हैं यहाँ law of stairs नहीं है, ladder है. और ladder में ये है, the more you grow, जितनी हाइट ज्यादा होती जाती है उतना आप उसको खोलते जाते हैं, right? ऐसे ladders भी होते हैं. So this is what it tells, the law of ladder. इसी बात की निशानदेही करता है. You have got to be bigger on the inside than you are on the outside. जितना ज्यादा बिल्डिंग बड़ी होती जाती है उसको लगाया जाने वाला लेडर बड़ा होता जाता है. अगर मैं आपसे कहूँ कुछ देर के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो कोई जवाब देना चाहेगा? इमेजिन करके. बुर्ज खलीफा. इसके लिए आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी. Because Burj Khalifa, yes, that's the tallest one in the world. But my next question is, do you think that's the last tallest building in the world? Absolutely not. Absolutely not. It is not. So it is about the thinking. जितना ज्यादा हम अपनी सोच को बड़ा करते जाएंगे उतना ज्यादा हम बढ़ सकते हैं. अब जब हम अपनी सोच पे एक लिमिट सेट कर ले कि नहीं हो सकता, यहां तक है, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी? So we need to expand and we need to grow from inside so that we can grow from outside. इसलिए कि ये पूरी कायनात जब एक सोच का नतीजा है, तो फिर बुर्ज खलीफा तो बस किसी एक छोटी सी सोच का नतीजा है. So अगर वो किसी छोटी सी मुराद है, I'm not just despising the person but telling you comparative to the creator. So that is the beauty of human being and the creation of human being, that we are the crown of creation. और सारी बात आती है सोच पर. So the bigger we think, the better we can do. And that is how we can reach to our potential. Next is law of the rubber band. और रबर बैंड के बारे में आप सभी जानते हैं कि जैसे रबर बैंड पड़ा होता है और बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली रबर बैंड उस काम के लिए नहीं है जब तक वो स्ट्रेच आउट नहीं करता. सो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं करना, लेकिन जो उसके अंदर पाई जाने वाली टेंशन है, एक्चुअली जब तक वो स्ट्रेच करके उस टेंशन के अंदर चीजें नहीं लाता तो इट कैन नॉट ग्रो. इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो that where you are and where you want to be. Are you stretching yourself? So stretch pain लाता है sometime. Stretch जो है वो matter करता है. That sometimes it's burdened on one side. Then you are stretching on the other side. आपकी physical stretches भी ले, exercises भी. But stretch is actually which takes you where you want to be. आप अपने फिजिकल गोल्स नहीं अचीव कर सकते if you are not stretching out. आप अपने प्रोफेशनल गोल्स अचीव नहीं कर सकते if you are not stretching out. आप अपने एकेडमिक गोल्स नहीं अचीव कर सकते if you are not stretching out. अपने बिजनेस गोल्स अचीव नहीं कर सकते if you are not stretching out. So there are the things that you have to do by practicing this law of the rubber band. कंफर्ट जोन से निकलना. कोई उड़ना नहीं सीख सकता परिंदा अगर वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलता, और काउच पोटैटोज होने के लिए हम नहीं पैदा किए गए. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ट्रेड ऑफ्स. क्विकली हम इसको देखते हैं. व्हाट इज द लॉ ऑफ ट्रेड ऑफ्स?
ये है द हायर द क्लाइंब द टफर द ट्रेड ऑफ्स। ये तो इसकी टैगलाइन है, लेकिन ट्रेड ऑफ्स क्या है? आप में से बहुत सारे जो कॉरपोरेट साइड के लोग हैं आप जानते हैं जी, ये तो लेन देन है। सो अच्छा पाने के लिए फिर कुछ खोना भी पड़ता है। तो आप फिर ये देखें कि आपको लाइक जस्ट नाउ ये टाइम आप कहीं स्पेंड कर सकते थे, लेकिन हफ्ते के 2 दिन 10 हफ्तों तक इस कोर्स के लिए आप ट्रेड ऑफ ही कह रहे हैं ना, राइट? सो यू आर पेइंग द कॉस्ट। और भी लाइफ में फिर देखिए, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, लाइक अच्छी सेहत के लिए ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, ऑल द जंक इज केप्ट असाइड। हेल्दी लाइफ के लिए यू राइज अप अर्ली, यू गो टू बेड अर्ली, और मे बी यू वर्क लेट नाइट बट यू हैव द गोल्स इन योर माइंड, आपने कुछ टारगेट किया हुआ है, तो इसके लिए फिर लॉ ऑफ ट्रेड ऑफ जरूरी है। मे बी यू आर ट्रेडिंग ऑफ द टाइम विद फ्रेंड्स, maybe you are trading off leaving a city, going to another city, leaving a country, going to another country to get a better opportunity to learn maybe. So these are the trade-offs. Then law of curiosity, जहां आकर आपके अंदर से सवाल खत्म हो जाते हैं, सीखना खत्म हो जाता है। एक फिजिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर, और इंतहाई क्यूरियस शख्सियत थे, लेकिन 70 साल की एज में ही द प्रोफेसर, ही वाज सिटिंग इन अ कैफेटेरिया, और यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में उन्होंने देखा कि जो वहां पर वेटर आ रहा था वो किस तरह से प्लेट्स को ऐसे फेंकता है और वो रिवॉल्व होती हुई आती हैं हवा में, और फिर वो उनको दूसरे हाथ में पकड़ता जाता है। That is what clicked his mind, curiosity पैदा हुई, and he started thinking about it. ये किस लॉ के तहत हो रहा है, ये फिजिक्स के किस लॉ के तहत हो रहा है, and that is where he set the equations, and he at that age won a Nobel Prize. So law of curiosity आपको और सीखने में मदद देता है, and it expands your thinking, और पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती जाती हैं। जब हम सोच करते हैं तो कोई रास्ता निकल ही आता है। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स अस ग्रो। कैसे और क्या किया जा सकता है लाइफ में, कैसे बढ़ा जा सकता है, ये सब सोच और क्यूरियस थिंकिंग के साथ है। देन लॉ ऑफ मॉडलिंग, एज अ लीडर योर फर्स्ट स्टेप इज नॉट टू लीड बट टू बी सक्सेसफुली क्रेडिबल। एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो फौरन से लीड कर रहा है, तो अच्छा लीडर वो है जो क्रेडिबल है, जो लोगों की नजर में एक पहचान पाता है। सो लॉ ऑफ मॉडलिंग में नॉट अ मस्ट के आपकी आप अब ये कहें कि कोई बड़ी सीट होगी, लोग आपकी तरह होना चाहें, आपके अंदाजे गुफ्तगू से मुतासिर हो रहे हो, तो आप एक लीडर हैं, आप मॉडल हैं उनके लिए, जो रोल मॉडल बन रहा है। और आज के दौर में आप देखें, बच्चे जब हम पूछें आप किस जैसा बनना चाहते हो, तो उनके सुपर हीरोज बाहर नहीं मिल रहे होते हैं, या बड़ी हिस्टोरिक पर्सनालिटीज के एकदम नाम नहीं लेते। दे माइट स्ट्रेट अवे से माय बाबा, आई वांट टू बिकम लाइक माय मदर, आई वांट टू बिकम लाइक माय आंट, माय आंटी। सो हम इन द हाउस एंड आउटसाइड इन द प्रोफेशनल लाइफ, सो हमारी पर्सनल ग्रोथ में ये बात अहम है कि अगर हम अपनी लाइफ से एक मॉडल सेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल लाइफ बन रहे हैं, देन वी आर ग्रोइंग। अगर नहीं तो यहाँ भी फिर गौर करने की जरूरत है कि मेरी ग्रोथ रुकी हुई है अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। और यहाँ पर मैं इन्फ्लुएंस के हवाले से, एक इंसानी इन्फ्लुएंस के हवाले से एक बात बताना चाहूँगी कि इट्स लाइक ओल्ड स्टडी, लेकिन क्योंकि अब तो दौर आ गया है और बहुत सारा कुछ, लेकिन एक इंसान अपनी, ये उस स्टडी में था कुछ साल पहले, कि अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट वो 10,000 लोगों को मिल पाता है, एक सोशलाइज करने वाला इंसान, और 10,000 लोगों को अगर वो मिल पाता है तो 10,000 लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता है। नाउ इट मैटर्स कि वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है या नेगेटिवली।
That is what matters. So इसलिए, if you are not influencing the people positively, you need to grow in the area of your life. Next is law of expansion. So आप देखें कि एरो के आगे जब इस तरह से साइन आ रहा होता है, तो what does that mean? एरो का साइन shows you can grow this way. So हमारी लाइफ के 4 dimensions में, east, west, north, south, we can grow every side. There are few things where we cannot grow. एक एज है जहां पर कद नहीं बढ़ता, एक लिमिट है आपके वेट की, आप वहां से इंक्रीज कर सकते हैं, वहां से बैक कर सकते हैं, लेकिन एक कैपेसिटी के बाद आप नहीं बढ़ सकते। बट अबाउट योर पोटेंशियल, आप जितना ज्यादा बढ़ सकते हैं, आप उससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ कि आप कितना ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए स्टॉप आस्किंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक, स्टार्ट आस्किंग हाउ फार कैन आई गो। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब आप पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ योर बर्थ, फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ योर बर्थ। It's a contribution of someone giving you birth. It's a contribution of someone feeding you. It's a contribution of someone teaching you. It's a contribution of someone that you physically grew. It's a contribution of someone that you academically grew. It is a contribution of someone that you grew professionally. So आप अब भी उसमें बढ़ते जा रहे हैं. So this is by the contribution of someone. We can pay back those people, and we can pay back the society by further contributing from our life, by leaving a legacy. If my life is not contributory, I have not actually grown in my potential. I have not actually rendered to the world what I could. जो मेरे अंदर सलाहियतें, जो मेरी कैपेसिटी में मैं कर सकती थी, and the knowledge I had gained, anything that I had, अगर मैंने वो contribute नहीं किया, तो then I have done nothing. I just lived for myself, and that's it. And I believe we don't have anyone here who is living for him or herself alone. We are the people who want to live for others too. And not only in this life, but we are the people जो legacy छोड़ेंगे. My next session with you will be 5 levels of leadership, जिसमें हम leadership के उस extended level पे बात करेंगे जो legacy के हवाले से है. But इतने सेशन को यहाँ conclude करते हुए we'll take a short break, और फिर हम कुछ minutes में दोबारा मिलते हैं. Let's take 5 minutes break, but live these laws and reach your potential. We'll be back in 5 minutes. Take your break, drink some water, stretch out, or maybe get a cup of tea or coffee for yourself. See you then.
अभी क्या टाइम हुआ? 40, राइट राइट। जी, अभी वापस आते हैं और कविता भी वापस आएंगी थोड़ी देर में। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जस्ट अ मिनट, वहां से इको आ रही, मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करें इसको ना। अच्छा जी, ये जो सेशन है, इसको रखने का मकसद भी इंटेंशनल था ना, यहाँ पे इस प्रोग्राम में, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे भी हमने ये सेशंस करवाए हैं, कंप्लीट सेशन था जॉन मैक्सवेल का 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ है, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे सिर्फ इंटेंशनल लिविंग के ऊपर सेशन डिमांड किया, और हमने गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाके सिर्फ और सिर्फ इंटेंशनल लिविंग के ऊपर भी बात की। तो ये सेशन उन लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल हुआ, यानी कि जिसने लोगों के सोचने के अंदाज बदल दिए, लोगों के सोचने के तरीके बदल दिए, और फिर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि चले जो कुछ भी तो वो कर चुके हैं वो कर चुके हैं ना, वट एवर यू हैव डन कांट बी अनडन। ठीक है, जो भी आपने कर लिया उसको वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अब आपने करना है बाकी लाइफ में, चाहे वो जितना भी टाइम हो, उसको आप प्लान करके कर सकते हैं, पहले से बेहतर कर सकते हैं, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी पहले से डिफरेंट हो सकती है ना। तो एक पालमन चाइनीज प्रोवर्ब है, या कन्फ्यूशियस की बात कहते हैं कि ये दरख्त लगाने का बेहतरीन टाइम आज से 20 साल पहले था, दूसरा बेहतरीन टाइम दरख्त लगाने का आज है, कि जब आप इरादा कर लें। तो हमने ये प्रोग्राम नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ भी रन किया, नस्ट के साथ हमने जब रन किया, लोगों ने इसको पहले वेटेज नहीं दी, लेकिन जब वो इसकी इन डेप्थ उसको स्टडी करना शुरू कर दिया, फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि यार कितना वैल्यूएबल काम है, कितना ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है ये। और ये जो लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके आपसे हर लॉ को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया होगा, जब कभी हमें मौका मिला डिटेल से बात करने का तो हम इस पर डिटेल से भी बात करेंगे। तो कितने तेजी से आपकी लाइफ को ये चीजें चेंज करती हैं, आपके सोचने के अंदाज को, आपके पैटर्न को, लाइफ थिंकिंग पैटर्न को चेंज करती हैं। तो हमने एक दूसरे से इंटेग्रेटेड सेशंस रखे हुए हैं, डिफरेंट मास्टरमाइंड कोर्सेज से लेके ना। और आप थिंकिंग के ऊपर भी जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा, कल एक है कि सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग क्या होगी, इस तरह की चीजें होंगी। ये सारी की सारी वो चीजें जो फाउंडेशनल हैं, यहाँ से आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद आपके लिए ये कोर्स और ये लर्निंग जो है ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब दोबारा स्टार्ट। ओके, आप होगी। यस, बिल्कुल आप आए, मैं करता हूँ। राइट, तो इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा, कोर्स मटेरियल भी आ जाएगा, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें, आप हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट करें, वहाँ पे भी आपको जो प्रीवियस बैचेस में से CHRP के अंदर ग्रेजुएट्स हैं, उनके प्रोफाइल को देखने का मौका मिलेगा, उनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, और आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन का प्रोफाइल है, या और भी हम नेटवर्किंग करते होते हैं, और आपके इस प्रोग्राम के एंड पे भी हम आपको मौका देंगे कि हम एक नेटवर्किंग करें इन सारे जो CHRP के ग्रेजुएट्स हैं, ताकि एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्निंग का, कुछ सीखने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, और फिर हम देखें कि हमने किस तरह से इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में। तो जब ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद आपको लगेगा कि कितना कितना डिफरेंस करती हैं ये चीज़ें। जितने भी हमारी फिलोसफीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं जो अभी डिस्कस होंगी आगे जाके डिफरेंट कोर्सेज के जरिए से, डिफरेंट सेशन के जरिए से, तो वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। राइट, थैंक यू। नाउ आई एम मेकिंग यू अगेन द होस्ट।
Welcome back, and hope you had good short break. Let's start off with the next part. And here we are going to learn merely about the law of intentionality. Again, the tagline, growth does not just happen. So if it just does not happen, what do you have to do? You have to plan something. You have to have a destination, a goal in front of you. And to reach that, you have to have a plan. So a question already is in front of you. Do you have a plan to grow? जब आपसे ये सवाल है तो surely आप में से कुछ इस पे काम कर चुके होंगे. If somebody has not worked on it ever, और बस आप एक short term plan कुछ कर लेते हैं, we are talking about personal growth in life. So that is where you have to look for a plan. हम में से कोई अगली घड़ी को नहीं जानता, that's the fact. But उम्मीद पे दुनिया कायम है. इसलिए we also don't know how long I'm going to stay in this world, but I should have a plan. Sometimes people say, आने वाला कल किसने देखा, इसलिए छोड़ें. बेशक आने वाला कल हमने नहीं देखा, but we should have a plan for tomorrow. So growth is not natural. अगर growth natural नहीं है और आप उसके लिए plan रखते हैं और plan करके अब आप बढ़ना चाहते हैं, अक्सर we get gaps. What could be those growth gaps? उन पे थोड़ा सा हम work कर लेते हैं. अब work करते हुए मैं चाहूंगी प्लीज आप note down कीजिए अपने लिए, because this session is merely for each and every individual who is attending here. और आपको लगता है कि ये मेरा गैप है तो ये आपको हेल्प करेगा. merely it's for you, so you are going to find it out, will be helpful in that case. तो फिर आप इस फाइंडिंग से अपने उस गैप को दूर करने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं. So first is the assumption gap. The first gap is the assumption gap. Assumption gap, the word itself tells, where it says, I'm sorry. So the assumption gap tells me that I will grow automatically. ये वो गैप है जिसमें अक्सर लोग जो assume कर लेते हैं चीज़ों को, खुद ही बैठे बिठाए सोचते हैं बस ठीक है हो जाएगा. और जब बैठे बिठाए हो जाएगा, and again I believe that such people are not here in the room. So let's move forward to the next gap, जिसमें the knowledge gap. अक्सर जब हम कुछ करने का सोचे और कहते नहीं इसके बारे में मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, let me not do it, let me not stand out for it, step out for it, तो वहीं पर आकर हम छोड़ देते हैं और हम आगे ग्रो नहीं करते हैं. सो ये नॉलेज गैप अभी देखें, अगर गैप था इस साइड में, यकीनन you are not repeating the same thing in your life when you are enrolled in this course. आप यही सोच कर आए ना कि कुछ और ऐड होगा, कुछ नया करेंगे आप इस कोर्स को लेकर. This is why you are investing your money, your time, and you are learning, you are adding to your knowledge. Likewise, as this session is about personal and professional growth, so वो आपकी professional growth है जो इस टाइम पर otherwise with CHRP होने जा रही है, but otherwise as well, if you want to do something and if you stop कि मेरे पास knowledge नहीं है,
तो गैप को ख़त्म करने से गैप ख़त्म होगा, खुद ब खुद ये ख़त्म नहीं होगा। सो प्लान हम बना सकते हैं, लेकिन प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए वी शुड नो कि अगर कोई बात, कोई गैप है तो हम उसको ख़त्म करें, क्योंकि प्लानिंग इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से ग्रोथ नहीं हो सकती है। एंड फॉर योर ग्रोथ यू हैव टू बी इंटेंशनल। खुद ब खुद हम नहीं भर सकते, इट्स नॉट नेचुरल। सो व्हेन इट्स नॉट नेचुरल वी हैव टू डू समथिंग। तो अगर कुछ ऐसे गैप्स हैं, then we have to take those gaps out. Next is the timing gap. It's not the right time to grow. कई बार हम यही सोचते सोचते इस साल नहीं अगले साल कर लूंगी, अगले साल नहीं अगले साल कर लूंगी, और फिर आकर कई बार आता है अच्छा now the course limit has ended, the time limit is over, it has ended, और फिर कई बार आपके पास मौका नहीं, कई बार फाइनेंसेस सब कुछ है, कई बार फिर हमारे पास वो टाइम नहीं होता, हम मजीद मसरूफ हो जाते हैं। तो हमें लगता है नहीं अभी अगर करेंगे तो अभी ठीक नहीं। इट इज़ गुड टू नो कि राइट टाइम कौन सा है, बट हमेशा राइट टाइम का वेट करते हुए हम ग्रोथ की वजह से रह ना जाएं। Try to make time the right time, not to wait for the right time. और फिर उसके बाद the mistake gap, अक्सर ये गैप कि मैं जब शुरू करूं कुछ भी तो मैं परफेक्ट करूं, और हम गलतियां करने से अक्सर डरते हैं। मेरे से गलती ना हो जाए इसलिए मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं जब करूं शुरू तो ऐसा करूं फिर परफेक्ट हो। तो वी आर नन ऑफ अस लाइक वी आर परफेक्ट। तो जब हम ऑन द वे टू परफेक्शन है, वी आर नॉट परफेक्ट। हम बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग, लेकिन if somebody says that they have learned without making any mistake in their life, I don't know where that person exists. Another growth gap is the perfection gap. I have to find the best way before I start. So mistake मुझसे ना हो जाए, और perfection ये कि जब मैं शुरू करूं तो कोई बेहतरीन तरीका मेरे सामने हो, बस मैं इस लेवल से शुरू करूं जहां पर कोई गलती नहीं आएगी। So it's pretty similar yet different. And this is another gap. And then the inspiration gap. I don't feel like growing. So बहुत सारा कुछ हम इसलिए कई बार नहीं कर पाते हैं। अच्छा अभी मुझे नहीं लग रहा कि मैं ये करूं, या मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए। So such inspirations, they also become a gap in our personal growth. Also professional. And then the comparison gap. Others are better than me. यार पहले ही इतने लोग इस तरह कर रहे हैं, फिर मैं उनके सामने क्या, मैंने क्या कर लेना है। और ये सोचते सोचते हम अक्सर चीजों को कर ही नहीं पाते। Whereby, referring to the beginning of this session, I did ask each one of us know very well about ourselves that हम unique individuals. हम में से हर एक different है। Why? Because we are created by the Creator, and infused in us is potential, जिसकी कोई हद नहीं नाप सका। Next is the expectation gap. अक्सर ये होता है प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लाना अभी शुरू ही की है, महीना हुआ है, मे भी 2 महीने शुरू किया, हो सकता है कईयों को लगे आज पैशन जा रही है। और इस तरह से जस्ट लाइक यू नो मेडिसिन हम शुरू करते हैं कई बार, और अभी पोज लेने के बाद समझते हैं बस अगली जो है थ्रू द कोर्स, और वहां पर हम कहते हैं नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी बट मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, इस वजह से जो है ना चीजें नहीं होंगी। सो समटाइम्स हम समझते हैं कि चीजें
मेरे सोच के मुताबिक हैं और ईजियर होंगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से हटके हो जाती हैं, तो हम फ़ौरन क्विट कर देते हैं. Quitters are not the winners and winners are not the quitters. Now, I give you a little time और थोड़ी देर के लिए सोचते हुए, just 1 minute, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए. यहाँ पर 8 gaps mentioned हैं. If any of these gaps is hindering your growth, तो please note it down. नोट डाउन कर लेना इसलिए भी अच्छा है चीज़ों के लिए कि आपके सामने रहती हैं. ये भी डिज़ाइंड लाइफ का एक तरीक़ेकार है. जब नोट डाउन की जाएं चीज़ें तो आपको याद रहती हैं, आपके सामने बार बार रहती हैं. इट्स मोर हेल्पफुल टू वर्क आउट और आप उन पे काम कर सकते हैं. सो इफ एनी ऑफ दीज gaps exist in your life, please note it down to work on it and get it out of your life. And since we don't have, I would like कि फिर भी कोई एक अगर बताना चाहे कि कोई ऐसा गैप जो आपको आज लग रहा है कि ये है मेरी लाइफ में, एनी डेयरिंग पर्सन, it requires a lot of courage. Yes, your name please. Faraz Khan. Yep. I think the perfection gap. Great. Thank you for being daring. And yeah, I look forward to have great sessions with Hi. I think for myself, it is the knowledge gap. I think मुझे ऐसे लगता है कि I don't know actually how to grow, and maybe this is also one of the reasons I joined this session. I'm looking forward कि मुझे पता चल जाए कि मैंने किस path को choose proper करना है. जी बस जस्ट अ मिनट, वेट अ वाइल. दोबारा कनेक्ट हो रही है, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी. ठीक है.
My apologies for the inconvenience because of the unstable network. So let us resume. We were talking about transitioning. So मुझे भी थोड़ा सा transition करना पड़ गया एक network से दूसरे में. And let's talk about the life transition. Let's talk about the transition of your current situation and from your current, status to intentional, to being intentional. जहाँ पर आकर आप अपनी लाइफ में intentionally grow करें, intentionally चीज़ों को करते हो. So let's move on. Although अभी स्लाइड पर आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, लेकिन अपने प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए आपको ये 4 सवाल, जो अगेन सिंपल 4 क्वेश्चंस बट दीज आर द बिग क्वेश्चंस, ये पूछने की जरूरत है अपने आप से. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू वांट टू गो इन लाइफ. आपके डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, फोकस क्या है. Next is, if you want to write the answer now, you could, but later इसको like you can reflect और आप तब अपने लिए ये answers लिख सकते हैं. What direction do you want to go? So maybe you are thinking to get promoted, but again, सिर्फ career की बात नहीं हो रही है. It is about your personal life as well. So it's both personal and professional target. You can write it down. Next is, what direction do you want to go? Let me make it easy. Like if my destination is to go to, Murray, so वहाँ के लिए अब 2 रास्ते जाते हैं. If I want to go to Lahore, 2 रास्ते जाते हैं. मोटरवे भी है और GT रोड भी है. राइट. सो बहुत सारी जगह पे आप बाय रोड जा सकते हैं, बहुत सारे के लिए साथ में एयरप्लेन भी ले सकते हैं. अगर लाइफ का जो टारगेट आप कर रहे हैं, उसके लिए आपने ये नहीं सोचा कि किस डायरेक्शन से आपको वो अचीव करना है, क्या आपका तरीकेकार होगा, तो आप उसके बारे में भी जरूर सोचें. That is how you can implement your plan. Next is, what's the farthest you can imagine going? क्या जहाँ आप चले गए हैं, लाइक यहाँ आपने सोचा है कि ये मेरा टारगेट है, या ये मेरा ड्रीम था, ये मैंने अचीव कर लिया, तो इज इट द लास्ट, इज इट द फाइनल? लाइक अगर बुर्ज खलीफा की हमने बात की, तो मैं उसी को लेकर आगे बढ़ती हूँ कि इफ नॉट एनी अदर कंपनी, जो कि हो सकता है कि बहुत सी कंपनीज यकीनन कंपटीशन में वो सोच रही होंगी हम इससे बेटर बिल्डिंग बना लें, इससे टॉलर, तो हो सकता है सेम कंपनी भी यही सोच रही हो कि हम बुर्ज खलीफा के बाद एक नेक्स्ट स्काई स्क्रैपर बनाते हैं जो इससे टॉलर हो और वो टॉलेस्ट कहलाए. सो व्हाट्स द फार्देस्ट यू कैन इमेजिन गोइंग? आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं? थिंक दैट एज वेल. जो आपने प्लान तैयार किया है, लेट्स से फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, इज इट द अल्टीमेट प्लान फॉर योर लाइफ? क्या इतना ही ग्रो कर सकते हैं? क्या अगर आप HR के प्रोफेशन में हैं, तो could you just stay as an HR professional alone? क्या इसके साथ कुछ और भी कर सकते हैं? क्या इसके साथ कोई और डिग्री अचीव कर सकते हैं? क्या आप किसी कंपनी में ही रहेंगे, और you will have your own company, or just one company, or just one business, or maybe having the chains of businesses? And then how long will it take? This is the first big question. How long will it take? आपको कितना वक्त लगेगा अपने इस गोल को अचीव करने में, अपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, इसको अकम्प्लिश करने में? Setting a time frame is really important in life.
कुछ भी करें टाइम फ्रेम सेट करके. Time is an asset. Time is money. And it is merely in your hands to make it valuable. और जितने लोगों को आज हम सक्सेसफुल कैटेगरी में काउंट करते हैं, इफ यू गो थ्रू देयर लाइफ स्टोरी, तो आप उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने वक्त को कितनी अहमियत दी है, उन्होंने कैसे टारगेट किया है. ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट इलॉन मस्क. मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी इलॉन मस्क के बारे में. एक इंटरव्यूअर ने, मे बी ही वॉज अ जर्नलिस्ट, बट एक इंटरव्यूअर ने उसके फादर से इंटरव्यू करते हुए कहा कि नाउ यू हैव इलॉन मस्क, यू हैव दैट अदर सन. तो आप तो बड़े खुश होते होंगे कि इलॉन मस्क जो है वो लाइक ही इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट गाइज इन द वर्ल्ड एंड वेरी वेल नोन, और इस तरह से उसने अचीव कर लिया लाइफ में और इस तरह से है. उसके बाप का रिएक्शन बहुत सिंपल और नॉर्मल था. इनफैक्ट उसके बाप का रिएक्शन वर्ड्स में ये था, उसने कहा कि कंपैरेटिवली मैं अपने दूसरे बेटे को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ. जर्नलिस्ट वाज सो मच सरप्राइज्ड कि क्यों उसने ऐसा कहा. उसने कहा इसलिए कि जब अभी ये बहुत यंग थे उस टाइम पर इनके अगले प्लान सेट किए गए थे कि ये लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं. और मेरे इन दोनों बेटों में से जो मेरा दूसरा बेटा है वो अपने टारगेटेड प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि इलॉन मस्क अपने एक्चुअल प्लान से 5 साल अभी पीछे है. So this was just to inspire you and motivate you. Success, growth does not come like that. Growth does not happen. फिर आपके प्लान को काम में लाने का वक्त कौन सा है, ग्रोथ का वक्त कौन सा है, आगे बढ़ने का वक्त कौन सा है. तो कहा जाता है कि अगर दरख्त लगाने का अच्छा वक्त 20 साल पहले था और आप नहीं लगा सके हैं, तो उसके बाद अच्छा वक्त आज है. डोंट वेस्ट नेक्स्ट 20 days, 20 years. Do it now. So seriously, what are you waiting for? Get on to making a plan, and then get on to the plan and continue going. Would any one of you mind reading this, please? The only guarantee that tomorrow will be better is if you are growing today. So this is said by John C. Maxwell. How many of you agree with this? I believe everyone. कोई इस पे बात करना चाहे, elaborate करना चाहे. कोई जिनको थोड़ा slow feel हो रहा हो या थोड़ी नींद आ रही हो तो वो ही ज़्यादा बोल दें इस पे. If you work on yourself today and enhance your capabilities and work on your skills, then it is a guaranteed that you will be having a successful future tomorrow. It will set up the cornerstone for your future success. Of course. Yeah. Thank you for your valuable input, Salman Saab. Yeah. Just a moment. I Maybe- believe that unless you take the initiative today, there's no guarantee that you'll be growing if you are just waiting for an opportunity. Maybe it will come tomorrow or day after tomorrow. So it means that we have to take the initiative today. And Yeah. this will be the only guarantee that tomorrow will be better. Yeah, of course. Wow. Thank you. Thank you, the first lady ever spoken in this session after me. I so appreciate. Okay. Anyone else, please? It is, but it's more of a disrupted, I think. Distortion है आवाज में. I don't know if it's for others as well. लेकिन आप please बोलिए. Do try.
अच्छा, मैं इसको जो ये कोटेशन है ना, डोंट दैट टुमारो बेटर इफ यू आर ग्रोइंग टुडे, मैं इसको ना रिलेट करूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका है जो हम सब के लिए मशहूर है, तो उससे इसको जरूर रिलेट करूंगा कि अगर तुम्हारा आज गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं तो वो शख्स हलाक हो गया। तो अगर ये बिल्कुल वही जो जॉन मैक्सवेल ने कहा है, शायद उसकी कॉपी है कि अगर आपको अपना कल बेहतर करना है तो फिर आज उस पर काम करना होगा। और वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वल्लैहि इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। बेशक 100% दुरुस्त फरमाया आपने, और थैंक यू आपके वैल्यूएबल इनपुट के लिए। ऐसा ही है, अगर इंसान कोशिश नहीं करेगा और जैसी कोशिश उसको करनी चाहिए और जो अच्छी कोशिश वो करे तो उसको अच्छा फल मिलेगा भी। शुक्रिया सर। कोई और? Okay, let's resume. So now, as we have talked about, or as we have thought about the growth gaps, और फिर हमने उन पर काम करने के हवाले से थोड़ी बात की है कि उन ग्रोथ गैप्स को हम दूर करें, तो हम ट्रांजिशन करें उन गैप्स को दूर करके जो है वो इंटेंशनल ग्रोथ की तरफ, इंटेंशनल होने की तरफ। इसमें आकर अब बात आती है कि हमारी ग्रोथ के लिए हम इंटेंशनल हो तो जाते हैं, लेकिन अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्सर फिर भी हमारे अंदर फियर है जो फिर हमारी इंटेंशनलिटी को वीकन कर रहा होता है और हमारे इस प्लान को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा होता है। उनमें से कौन से फियर फैक्टर्स हो सकते हैं और उस फियर फैक्टर को हमने किस तरह से फेस करना है, that merely depends on us. So what could be those fears? It can be fear of failure. So failure is not a foe, enemy nahi hai. Failure is a friend. But for many, when it becomes an enemy, जो कुछ होता है मेरे साथ ही होता है। तो थॉमस एडिसन के बारे में यकीनन सभी ने सुन रखा है। हजारों गलतियों के बाद एक बल्ब ईजाद किया और ये कर लेने के बाद उन्होंने ये कहा, it's not that I failed 10,000 times. It's now I know that these are the 10,000 ways that you cannot make bulb with. So fear of failure we have to overcome. Then fear of trading security for unknown. अक्सर आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे होते कि ओह मैं ये कर लूं लेकिन पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाना कि पता नहीं आगे क्या होगा तो मैं क्यों ऐसे करूं, पता नहीं क्या होगा। सो रिस्क लेने पड़ते हैं। और मैं चाहूंगी कि क्विकली आप में से कोई ज़रूर अभी तक इनको लेकर बात की, बट इफ़ यू हैव एनी एनकरेजिंग स्टोरी आउट ऑफ दीज फियर्स तो कोई एक ज़रूर शेयर करें once I'm done telling about these fears, because हमने क्लास को रैप अप भी करना है। इफ़ इट कुड बी ओनली like 1 to 2 minutes. Then fear of being overextended on resources. मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं ये कर कैसे पाऊंगा, मैं कैसे कर लूंगी। So many times ये अच्छा है तखमीना लगाना, लेकिन ये भी है कि जितने रिसोर्सेज हैं उनमें कुछ करके दिखाना, that also matters. इसलिए it's really important कि इस फियर को हम निकालें। अगर बार बार आगे बढ़ने में ये फियर आता है कि ओवर एक्सटेंड हो जाएगा रिसोर्सेज में। अब देखें यही दुनिया जिसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, और यही दुनिया कोरोना के दिनों में घरों में महदूद हो गई थी और रेस्टोरेंट्स बंद थे और सब कुछ घर में पक रहा था और बनाया जा रहा था। यही दुनिया है जब पढ़ने के हवाले से बहुत कुछ, और यही दुनिया है जब अगेन आई एम टेकन बैक टू द टाइम कोरोना था और इनोवेट कर लिए इतने ज़्यादा
लोगों ने, इदारों ने, कि बस हम जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और इस तरह से पढ़ेंगे. So there are so many things they grew in. The companies grew in. It's not just IT जो innovations हैं वो सामने आई थी, but you know at the homes बहुत सारे रेस्टोरेंट घरों के अंदर खुल गए. People started learning the things. बहुत सारे हैं जो और तरह से चीज़ों को सीख पाए हैं when they were still at their homes. So there is always a way out to overcome the fear of being overextended on resources, then fear of what others think. ये तो इतना मसला है कि you know, मतलब पाकिस्तान की internationally कहीं ना कहीं it's not fair, it's not good, and I don't feel good about it. लेकिन ये एक पहचान कि मोस्टली यहाँ पर क्या है, दूसरे क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे. और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन गई, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे. So it's some other company, country, and they did make a documentary film on Pakistani women. लेकिन that was just mostly about the women. But overall, बहुत मर्तबा हम लाइफ में ग्रो इसलिए नहीं करते, मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे. Just yesterday, 10th of October, it was International Mental Health Day, or we were in a university, और वहाँ पर one of the specialist in mental health, वो बता रहे थे अपनी स्टोरी. उन्होंने कहा FCPS करने के बाद 2 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे घर वाले मुझे मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइजेशन करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे. और क्या कह रहे थे, लोग क्या सोचेंगे. तो मेंटल डॉक्टर हो, वो ये नहीं कह रहे कि मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं, तो मेंटल डॉक्टर, लोग क्या कहेंगे. And it took him 2 years, but he was still determined, and he kept on practicing, and also he kept on convincing his family one way or the other, और आखिरकार he succeeded. बहुत मर्तबा हम ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं. That was his relevant field, and he was determined as well. He had the plan. He did not, अगर कहीं के 2 साल उनके लगे और ज़ाया हुए हैं, but he was doing the things, he was practicing and learning the same subject, he was more prepared. लेकिन there are other many things जो आप कर सकते हैं, और उसमें आकर आ जाता है दूसरे क्या कहेंगे, और वहाँ आकर हम अक्सर ग्रोथ में रुक जाते हैं. नेक्स्ट इज फियर ऑफ पुशिंग अदर्स अवे. ये भी हमें डर, कई बार ऐसे एक अनजाना सा खौफ शुरू हो जाता है, नहीं कहीं दूसरों को ये तो नहीं लगेगा कि मेरे आगे बढ़ने से, मेरा ऐसे करने से मैं कहीं शायद दूसरों को पीछे ना कर दूं. Recently I just came to know, एक छोटी सी बात है, but just as an instance, एक example के तौर पर, in a family where there are 5 daughters and 1 son, and the son is on 2nd number, he did not allow his sister to do the masters before him. And when he said कि नहीं अभी आप ना करना, तो sister did not do it, thinking हाँ मैं कर लूंगी, तो मैं कहीं अपने भाई को वो पीछे ना कर रही हूँ. It's not just being the feminist, कोई ऐसी वाली बात, बट इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे मुआशरे में हम बहुत कुछ कर पा रहे होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर रोक देते हैं कि किसी दूसरे को ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम उनको पीछे कर रहे हैं और हम खुद आगे हो रहे हैं, जबकि दूसरे भी इनिशिएट नहीं कर रहे होते और उन्होंने किसी सूरत भी नहीं करना होता. कई बार हम उनके लिए छोड़ के जगह खड़े हो जाते हैं कि आइए आप आइए, वो आकर आएंगे और अगर आएंगे तो आकर सब कुछ स्पॉइल कर देंगे. What you could do is you could do, and it's good that just be cheerful, do help others to grow, but don't stop your growth by thinking that maybe you are pushing someone behind.
So let's quickly move forward and just know that this is an emotion and it stays if you stop it. ये उतना फैटी ओबीज होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, जायंट बन जाएगा. अगेन इट्स अबाउट थिंकिंग, और थिंकिंग का बहुत अच्छा जो टॉपिक सक्सेसफुल थिंकिंग, डिफरेंट थिंकिंग हैट्स, दिस इज गोइंग टू बी टुमारो. बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. Emotion and desire to change and grow. I believe you all are doing it. We always have a room of improvement. Then, room for improvement. And then, here, quickly take a time. और इससे पहले कि as I said कि अगर आप में से किसी के पास कोई स्टोरी है, अभी तक हमने जो कुछ देखा उसके मुताबिक बात की है, लेकिन अगर कोई फियर पे ऑलरेडी ओवरकम किया हो या ऑलरेडी जो है आपके पास ऐसी स्टोरी है विच इज़ इंस्पायरिंग, मे बी जस्ट 1 or 2 minutes, तो प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट एंड वी कैन प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी बिफोर वी कंक्लूड द सेशन. तो लास्ट में दिस इज द असेसमेंट ऑन दिस सेशन, जो आपकी पर्सनल असेसमेंट है. और इसके हवाले से अगर ये ऑन साइट हो रही हो मेयरली, तो हम इसको लाइक वी ऑलवेज डू प्रोवाइड दिस वर्कशीट, एंड एज यू आर ऑनलाइन, सो आप इसको अपने लिए प्रिंट कर सकते हैं, और आप इसको आज अगर फिल इन करते हैं तो वी रिकमेंड कि आप इस कोर्स के ओवरऑल CHRP जब आपका कंप्लीट होता है तो आप उस टाइम पे फिर इसको रिव्यू करें, अपने आप को असेस कीजिए, फिर से मार्किंग कीजिएगा. और अगर आपने आज की मार्किंग के बाद अपने आप पे काम करना शुरू किया उन एरियाज़ में जहाँ कोई वीकनेस है, जहाँ आपको एम्पावर होने की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि within this 10 weeks time you'll find yourself much better, and that shows that you are intentional, you are a successful person who is doing better every day. अभी इसको फिल करने के हवाले से मैं आपको बताती जाऊंगी, मेरे साथ आप नंबर्स देते हुए ज़रूर इसको फिल कर सकते हैं आफ्टर हैविंग लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस. वो ये है कि आपके सामने 2 कॉलम्स हैं, एक्सीडेंटल ग्रोथ, इंटेंशनल ग्रोथ. फिर उसके बाद एक स्केल है फ्रॉम 0 to 10, मिडिल नंबर ऑफ कोर्स 5, और 5 को मिडिल नंबर लेते हुए 50-50 बात है. लेकिन अगर 5 के बिलो आपको लगता है तो वो एक्सीडेंटल ग्रोथ में बात फॉल करेगी, और अगर आपको लगता है कि इस मामले में मैं इंटेंशनल ग्रोथ में हूँ तो आप अपने आप को 5 से ऊपर मार्क्स देंगे. आप 10 तक भी मार्क्स दे सकते हैं इफ़ यू फाइंड के 100% मैं इसी तरह कर रहा हूँ, तो यू कैन गिव योरसेल्फ 10 मार्क्स. और इस तरह से आपकी ये एक सेल्फ एवेलुएशन है. ऑल्सो प्लीज नो somebody someday in the previous sessions pointed कि हम खुद को कैसे एवेलुएट कर सकते हैं. सो वी आर नॉट ट्राइंग टू बी like bias और कुछ ऐसे, but just know कि it's something जो हमें self analysis देती है, और we can work for the betterment. So आइए हम इसको देखते हैं. एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले शख्स के अंदर ये बात होती है, ही प्लान्स टू स्टार्ट टुमारो. जो भी बात है वो कल पे छोड़ देगा, आने वाले वक्त पे छोड़ देगा. सो अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो 5 से नीचे मार्क्स दीजिए, और कोई भी नहीं देख रहा, इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू. सो आई वुड लाइक फॉर द participants in the classroom, if you could please mark for yourself, आप खुद को नंबर दीजिए, and it's really going to help you. Next is
इसके बरक्स इंटेंशनल ग्रोथ वाला शख्स इंसिस्ट ऑन स्टार्टिंग नाउ, जो उसने इरादा बांध लिया है, तहैया कर लिया है, वो उसी टाइम से शुरू कर देगा। तो आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट एक्सिट अच्छा हो जाएगा खुद से, बट इंटेंशनल ग्रोथ पर्सन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इंटेंशनल ग्रोथ वाला पर्सन, वो जानता है कि मुझे कुछ करना है ताकि मैं आगे बढ़ूं। That's only from mistakes. Intentional growth person learns before mistakes. आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? गलती जरूर होती है जिंदगी में, but sometimes अक्लमंद लोग वो हैं जो अपने आप को मेंटोर्स के गिर्द रखें, जो कुछ भी करने लगे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें। अक्सर जांच पड़ताल कर लेने की वजह से अगरचे रास्ता हमारा देखा हुआ ना भी हो तो हम बहुत सारी मुश्किल से बच जाते हैं, किसी दूसरे से पूछ लेने की वजह से जो अहेड ऑफ अस वहां से गुजरा हुआ हो। इसलिए अदर्स एक्सपीरियंस they do have a value. We should ask the people, we should learn from the books. ऐसा मिस्टेक से बच जाना यही है जब हम उस बात के हवाले से जानकारी कर लें, उस पर्टिकुलर चीज के हवाले से। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल, दे डिपेंड ऑन गुड लक। बहुत सारी चीजों में, आज ये दिन चढ़ा है, आज वो उसका मुंह देख लिया इसलिए दिन ऐसा है, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, ये हो गया था, ये तारीख मेरे लिए अच्छी नहीं, ये दिन अच्छा नहीं है। सो कहा जाता है कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और अब तो ऐसे लोग इंटरनेट पे देखने को मिल रहे हैं जो ऐसी पर्सनालिटीज इंस्पायर कर रही हैं जिनके हाथ क्या, उनके लिम्स ना अपर है ना लाइक लोअर, but they are just surprising the world. Next is इसके opposite, intentional growth वाले लोग, they rely on hard, they know that their hard work will surely pay back. Accidental growth people, they quit early and often, whereby intentional growth people persevere long and hard. वो जानते हैं कि आज बर्दाश्त कर रहे हैं, सख्तियां झेल रहे हैं, तो no pain, no gain. Next, accidental growth people, they fall into bad habit, and intentional growth people fight for good habit. अब ये थोड़ा सा वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, थोड़ा अंग्रेजी का फैक्टर आता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंगली कुछ गहरी बात है जो मेरी समझ में आती है कि fall into bad habits, accidental growth वाले लोग जो हैं बुरी आदतें पड़ जाती हैं। कभी नहीं हमने सुना किसी को अच्छी आदतें पड़ी हों। अच्छी आदतें कभी पड़ती नहीं है, अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं। Many times because of the bad habits we cannot grow. अब बहुत सारी आदतें अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार खाने ही की एक आदत खराब हो जाए तो बहुत सारा कुछ हम अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल ग्रोथ पर्सन टॉक्स बिग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट प्रैक्टिकल उस तरह का नहीं। इंटेंशनल ग्रोथ पीपल, दे फॉलो थ्रू, बिकॉज वो जो कहते हैं फिर वो करके दिखाते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल, दे प्ले इट सेफ, वो बच बचा के जिधर उन्हें फायदा नजर आएगा उधर वो होंगे, जैसे ही फायदा बदल गया तो वो भी बदल गए। और इंटेंशनल ग्रोथ पीपल, दे टेक रिस्क, ट्रेड ऑफ करते हैं, रिस्क लेते हैं, बट दे नो इट विल पे बैक। Accidental growth people think like a victim, whereby intentional growth people think like a learner. ये भी डिफरेंस है। सो आप बेहतर जानते हैं विक्टिमाइजेशन की सोच सोशली हम में आई, बट आई बिलीव HR people are the people's person, and being a people person is really an influential thing, जहां पर आकर you help people come out of such thinking. इसलिए one should not be into a victimized thinking. And then accidental growth person relies on talent.
मैं ये कर सकता हूँ काफ़ी है. Whereby intentional growth people, they rely on character. अब ये देखें, like for example, I'm just saying TikTok, social media, बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं उनके पास बहुत सारे जिन्होंने आज ये चैनल्स और फॉरेन से वो हाइप पे चले गए हैं, लेकिन most of those people and influencers are just the people with talent. इसलिए वो जितने तेजी से ऊपर को आए हैं, अगर कुछ टाइम में उनका चैनल बंद हो जाएगा तो लोग उनको शायद याद नहीं रखेंगे, लेकिन पीपल विद द कैरेक्टर वो हैं जो लेगेसी बनाते हैं, वो हैं जिनकी लाइफ क्रेडिबल होती हैं, जो उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी याद रखी जाती हैं, जो लोगों के जहनों पे एक इम्पैक्ट कायम करती हैं. So I'm not against TikTok or such social media, लेकिन just for an example I related. Next is stop learning after graduation. ये accidental growth के लोग हैं. Just जब भी graduation हो गई तो उसके बाद ख़त्म. मैंने ये कोर्स इसीलिए करना था या मैं क्लास के अंदर बस आऊँ और मैं थोड़ा सा मैं शो कर दूँ कि मैं मौजूद हूँ, and then I'm gone and taken no responsibility to learn. और just इतना कि नहीं, I have enrolled, that's enough. लेकिन intentional growth people, they know and they never stop learning. So I believe that we have the people who have intentionally started this course, and not only this course, आज का session एक booster है, और I believe that it must have boosted you. I believe it must have helped you, even if 1%, but we believe that it must have done something. So we wish you all the best for the upcoming sessions, and we believe that not only you'll be completing CHRP, but this particular session and few more sessions that you are up to take in all these 10 weeks, these are going to have a life-changing impact on you. Thank you so much for being so attentive. If you have a quick story that I wanted to ask you for, I had already asked, and if you wanted to share, तो कोई एक share कर सकते हैं. Otherwise, I'm done. Thank you so much for being great participants. खामोशी बता रही है कि किसी के पास कुछ नहीं. If anyone wants to say anything, and then we are wrapping up the session. It's 9. Question though. Yes, sir, please. How to overcome the lack of consistency? How to overcome the lack of consistency? By being consistent. How to be a consistent person? Yeah. How to overcome this lack, right? By being consistent. Once you have come to know, being aware is really helpful. So once you have come to know that you are not being consistent, find out, figure out, and there I must say, one thing is by reflecting what is affecting your consistency. अगर ये figure out कर लें, the next is you are aware. And not only you are aware that what is affecting your consistency, but also you are aware कि इस lack of consistency से आप क्या lose कर रहे हैं, क्या आप gain कर सकते हैं और कितना benefit कर सकते हैं. So that is how it's going to work. So first thing is reflection, lack of consistency. अगर आपको पता चल रहा है कि yes, it is there, so you are already aware of it. But further awareness से पहले आपको reflection करने की ज़रूरत है, और उस reflection में surely you'll get to know. और अगर वो factors आपको inconsistent कर रहे हैं,
Just for an example, maybe you are not being able to take enough sleep, and that is, you know, affecting your work efficiency the next day. So what is actually affecting it? आपको काफी नींद ना करने की क्या वजूहात हो रही हैं? So are you giving more time to the people? Are you giving the extra time to the work? How to manage it? Where you need help? Sometimes consistent होने के लिए, and we are not asking help from others. कई बार हम अपनी जगह पर वो सोच रहे होते हैं मैं खुद ही कर लूँगा, मुझसे खुद ही हो जाएगा. So that is how you seek help. Also you can, इस पे हम आगे बात करेंगे कि मेंटोर लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So हम उनसे जान सकते हैं how could it be done. Always have a mentor in life, and then it could be any coach. मेंटोर का डिफरेंस ये है कि वो तजर्बे से बात करते हैं, कोच आपसे सवाल जवाब करते हैं, और उनके सवाल जवाब से आप फिर फिगर आउट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हिंडर कर रही हैं आपकी कंसिस्टेंसी को. I believe it must have satisfied your answer. If not, मंसूर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? Or if any of you in the class? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. अच्छा, वो जो आपने सवाल किया था कि कंसिस्टेंसी के हवाले से किसको कैसे ओवरकम कम किया जाए ना, तो इसी से रिलेटेड एक और भी हमारी बड़ी पुख्ता आदत है, और बहुत से लोगों की क्या कहते हैं, उनके कैरियर में एक हर्डल है, एक हिंड्रेंस है, डेट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. राइट. तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमने जो सोचा है, जो प्लान किया है, वो कब करेंगे. और इस आज के सेशन में हमने उन चीज़ों को भी डिस्कस किया, और वो जो गैप्स थे उनको भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया. अगर हम उनको स्टडी कर लें, और जो एक बात बीच में की थी कि डू इट नाउ, जो आपने इरादा कर लिया कि करना है, तो फिर अभी से करना शुरू कर देना. ठीक है. फिर ये ना कहें कि मैं सुबह करूंगा, या मैं ये वाली चीज़ मेरे पास होगी तब मैं करूंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब करूंगा, जब हालात मुवाफिक हो जाएंगे तब करूंगा, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब करूंगा, जब मैं किसी और जगह पर चला जाऊंगा तो तब करूंगा. सर्दियों में कहेंगे कि गर्मियाँ आ जाएंगी तो गर्मियों में करेंगे, गर्मियाँ आ जाएंगी तो कहेंगे मौसम बड़ा ख़राब है तो फिर विंटर सीजन में करेंगे ना. तो इस तरह करते चले जाएंगे और इरादा करते चले जाएंगे, लेकिन इरादे को अमली जामा नहीं पहनाएंगे, उसको एक्शनेबल नहीं करेंगे. तो ज़रूरी है कि हम अगर बचना चाहते हैं, जो अभी आपने सवाल किया कि कंसिस्टेंसी को लेके आना चाहते हैं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी से बचना चाहते हैं, तो फिर हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना पड़ेगा, अपने इरादे पे पुख्ता होना पड़ेगा, और जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. और ये बेसिकली आज का सेशन फाउंडेशनल सेशन है, और कल का भी सेशन इसी से रेलेवेंट होगा, जो डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे, और कल इससे ज़्यादा डिटेल में बात होगी. और उसके बाद फिर हम प्योरली जो एचआर के टॉपिक्स हैं उनकी तरफ आ जाएंगे. मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू तबीता जलाल फॉर हैविंग सच वंडरफुल सेशन. और मुझे लग भी रहा है कि आप थोड़े से थक चुके होंगे इस वक्त, और क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है. तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी. बीच में मैं मीनवाइल ग्रुप के अंदर आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, साथ में जो हमारा लर्निंग मटेरियल है वो भी शेयर कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, हैव अ नाइस डे. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thanks to you all. Thank you, ma'am.